Good morning, students. As we have completed the chapter and just watched the summary also, now it's the time for doing the question answers of our poem Seeds, that is on page number 33. And the question starts from page number 34. So first the question is here. Answer this question. The speaker sowed some seeds. Okay. Many months ago, many weeks ago, or a few days ago. Yes. The speaker sowed seeds when he saw the seeds. Yes, in the poem we have read 4 weeks. There was written 4 weeks. Unseen. Here is not a. A weeks is no, and as is there. As is there means many weeks ago. Okay. The answer is many weeks ago. The second is the seeds have. What does the seeds have? Not sprouted at all. बिल्कुल भी sprout नहीं हुए. Grown into the trees? No. Sprouted small green shoots. Yes. A is the answer. Then the third one is the speaker uses the word frail to describe. Frail means the weak and the young stem. We can just say the weak or easily broken. And what is the weak here? That is the pebble? No. Seed? No. So the answer is the green shoot. Okay. Then the question answer that you have to do in your notebook. First question, what does the plant do when it has pushed up to the surface of the ground? प्लांट ने जब पुश करके वो सरफेस पे आ गया है, ग्राउंड के सरफेस पे आ गया है, व्हाट डज इट डू? यस, द प्लांट बास्क्स इन द सनशाइन. बास्क मीन्स टू एंजॉय द वार्मथ एंड द लाइट ऑफ द सनशाइन. प्लांट ने सनशाइन की जो बास्क है, जो गर्माहट है और रोशनी है, उसको एंजॉय किया. द सेकेंड वन इज, what do the words "haved away" indicate in the poem? What does it say about the seed? Yes, "haved away" means pushed away. And what does it indicate? It indicates that "haved away" indicates the way the plant pushes everything to come out of the ground. कि जो प्लांट है वो हर चीज़ को हैव्ड अवे कर रहा है, मीन्स पुश्ड अवे कर रहा है. वो कोई भी चीज़ हो जो उसे ग्राउंड के बाहर आने से रोक रही है, बिकॉज इट वॉन्ट टू कम आउट. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इन द सेम क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डज इट से अबाउट द सीड? व्हाट डज द पोएट वांट टू से अबाउट द सीड? दैट इट सेज दैट द सीड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ग्रो इनटू अ प्लांट. इससे हमें ये पता लगता है कि जो सीड है उसमें बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर इज़ देयर दैट इट वांट टू ग्रो इनटू अ प्लांट. एंड इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग यू मस्ट हैव द ग्रेट डिज़ायर. अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रेट डिज़ायर होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड इज, how do we know that the seed wants to grow into a plant? How do we know? हमें कैसे पता लगता है? The seed's determination in pushing a pebble to come into sunlight. सीड का जो डिटर्मिनेशन है, जिस डिटर्मिनेशन से सीड ने इस पेबल को पुश किया है टू कम इनटू द सनलाइट, सनलाइट पाने के लिए, बाहर आने के लिए, that proves that it wants to grow into a plant. Sorry, after this question number 3, it is question number 4. But I have written here 5. This is question number 4, beta. Okay? 4 will come here. 4. Yes. 4 is, do you agree with the speaker that the seed is stronger than it seems? क्या आप स्पीकर की इस बात से अग्री है कि जो सीड है वो जितना दिख रहा था उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? Yes. Yes. The seed is tiny, but it is quite strong and fight for its need. Seed tiny जरूर means बहुत छोटा जरूर है, but
वो इतना स्ट्रॉन्ग तो है कि जो उसको चाहिए, व्हाट इट्स नीड, उसे पाने के लिए वो फाइट करके उसे पा सकता है. फॉर एग्जाम्पल द सनशाइन. ओके, these were the question answer that you have to just learn and do in your notebook. Thank you, students.